Grazia's Young Fashion Awards, and the name says it all, right? We're going to be celebrating youth icons this evening. Oh my gosh, I don't know who I'm wearing. Shit, you know what? I don't know who I'm wearing. Who? Rims and Dadu. Rims and Dadu. That's who I'm wearing. Okay, so I have a question. It's not really well. It's just that the Supreme Court has just passed a bill saying that the live-in relationship will be considered as married couples. So what do you think about it? Just a general. Thanks. Well, yeah, okay, sorry. बट इसका वर्डिक्ट जो 2 दिन पहले पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लीगल पास आउट किया है saying that the live-in related couple will be considered as a married couple. So do you think कि जो मैरिज की इतनी अहमियत है हमारी दुनिया हमारे देश में वो कहीं ना कहीं घट जाएगी बिकॉज ऑफ दिस? नहीं, आई थिंक मैरिज की अहमियत घटेगी ऐसा नहीं है, पर लिव इन रिलेशनशिप्स की अहमियत बढ़ जाएगी. लेकिन आपको लगता है ये सही है? हाँ, क्यों नहीं. अगर हम अरेंज मैरिज कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्ट्रेंजर्स से शादी करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने चॉइस के पार्टनर के साथ अगर कोई 2 कंसेंशुअल अडल्ट्स रहना चाहें तो उसमें बुरी बात क्या है. लास्ट में अगर आपको एक मौका दिया जाए किसी के साथ लिव इन में रहने का, कोई भी? ओह अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ. So I can tweet. Hi, Hi. So, firstly, who are you wearing tonight? I'm wearing Gaurav Gupta and I'm wearing jewelry by Nirav Modi. No, I'm going to talk to you. It's easier. Sorry. Yeah, come over there. No, stand up so I can see you. Huh? So, what is this whole event about? What is the highlight of Of the Grazia Awards? Well, the Grazia Awards is actually one of the funnest awards, I think, because they start late and it's more like a party. So I always look forward to coming to them. Last year I won an award. I can't remember what I won for, but I think it was Showstopper of the Year or something. I can't remember. This year I'm not winning. I'm just giving an award to somebody else. And for me, the highlight is seeing Ekta and Marinaz because they're my friends and I like working with them. I shot with them last week in Hong Kong. So I did a deal with Ekta where if I come for the awards, then I get to pick what cover I want. I have one last question with you. Supreme Court has passed a rule that the couple who stays in live-in relation will be considered as married couple. So do you think that marriage value will somewhere go down by this rule that has come out? Look, I can't answer that question straight off the top of my head because I think it's I know it's a bit of a political question. I do believe in the institution of marriage, but I think it's a personal choice. I think if you're living with someone, then I mean that's a commitment in itself, isn't it? In a way. Thank you. Do you think it's right on the Supreme Court's part that I want to get a drink. Thank you. any secret that you would love to reveal from the things that are going to happen inside? Secret? Well, it's a secret, so how can I reveal it? No. Would you just reveal it for us? क्या होगा आप क्या करने वाले हैं? मैं प्लान करके आई हैं आप? No, I think you have to go inside to take a look. It's much nicer when you don't reveal secrets. So it's not really event, but recently Supreme Court has passed a rule saying that the live-in relation couples will be considered as married
married couples. So do you think that in our country, which has so much of culture and tradition in it, so do you think that the marriage value will go down because of this rule that has come out? See, I think in today's day and age, people are growing and we have to evolve with the way that things are going. You cannot be so stuck. Marriage is a marriage of the mind. So if two people have been living together for many years, they are somewhere in their minds already married. So it's not a piece of paper that tells you you're married. It's in your heart and in your head that tells you you're married. And I think it's amazing if the Supreme Court is going to be progressive enough to recognize these relationships. I think yes, democracy is about growing and being progressive. Okay, just a fun question. Anyone in Bollywood or Hollywood who you desire to have a living relationship? Oh my God, Wolverine, Hugh Jackman. That is because you are a huge fan of him. I'm a huge fan, yes. Thank you. एक्साइटिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ आज. आपके ड्रेस के बारे में क्या? एक्चुअली आई एम वेयरिंग दिस वेरी, आप देख नहीं सकते लेकिन थोड़ा ना इधर लुक की आप देख नहीं सकते लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड इट्स बाय नेहा अग्रवाल. उनके स्प्रिंग समर कलेक्शन से है. सो या आई थिंक इट्स लुकिंग रियली नाइस. क्वेश्चन है लेकिन वो एक इवेंट में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूल पास किया है. सॉरी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया है कि जो भी लिव इन कपल्स है ना उनको मैरिड कपल कंसिडर किया जाएगा. डू यू थिंक कि जो मैरिज की वैल्यू है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रूल? I think कि marriage is a very sacred entity and I feel कि whenever anyone decides, जब दो लोग decide करते हैं कि उन्हें शादी करनी है, it's a very sacred bond. So I feel that you can't just play around with that and you can't just say that okay now आप साथ रह रहे हो तो आपकी शादी हो गई. But I think marriage needs much more. It's a very pure form. So I think that there's much more that is, other than living with each other, there's much more than marriage needs. So yeah. So do you agree with this rule that has come out or you have I think that couples that live together, I don't think that they are considered to be married. Not according to me. Okay, second okay, one last. If given a chance, who will be that Bollywood actor or Hollywood actor who you would love to be in a living relationship? Hi. Parents, you देख रहे हो. I don't know. I think it doesn't make a difference if it's Bollywood or Hollywood. But if I could meet someone, it would be Ryan Gosling. Love him. हॉलीवुड से याद है ये मैडम बोल रही थी कि आप डकोटा जॉनसन की तरह लगती ओह सच में ठीक है. यहाँ भी एक 50 शेड्स कर लिए फिर. I may be doing, but can I talk? Can't talk right now. Picture any upcoming project? Can't talk about them. That's why you asked me. I said I can't. I'm not allowed to speak. Sorry. Thank you. अंदर से आप आ रही है पहली ऐसी महिला है जो अंदर से आई. नहीं एक्चुअली आपने बुलाया था इसलिए आई हूँ. अंदर का क्या कुछ माहौल बताना चाहेंगे आप? अंदर माहौल एक्चुअली वार्म अप हो रहा है. एवरीबडी इज गेटिंग डाउन टू हैविंग अ गुड टाइम. Everybody has a glass in their hands and there's a lot of chitter chatter. There's a good buzz. So I think the warm up बहुत अच्छा चल रहा है and I think it's going to be a great show. और ये कुछ रेड रोज टाइप्स का आपने लगाया है यहाँ
हार्ट ये क्या है? आई थिंक कुछ डिफरेंट है. This is not a red rose. You'll have to ask Archana Rao what it is, but it's more like taken from menswear, where they put in a handkerchief in their pocket. So it's taken from that, yeah. There's one question for you, which is Yeah. not from this event. Supreme Court recently has passed a rule that the live-in relation couples will be considered as married couples after a certain period that they live in live-in relation. So do you think that in our country the value of the marriage will go down because of this rule that has come out? I think we just sort of have made a really big deal about marriage because it's very important, so to say, between two people to, in their hearts and in their minds, really commit to each other. As true as it is that marriage is an institution, I think it really begins from your own heart and your commitment towards one another. So putting a stamp on it or just living in together and feeling like married and fulfilling all your responsibilities as a couple towards maybe both families, all extended relationships. I think that's what matters most. Yeah, I don't think one can label things and then have more meaning to them, and if you don't label them, I think it's of no value. So I think that answers your question. Yeah, I know, but people out here idealize you guys as their idol. So, and this trend has also come from Bollywood. There are many Bollywood actors who in past have had a live-in relation and who are married or who are not together. Correct. Do you think it's because of them that this rule has come out and it's now in trend, as that we can say? I don't think something like this can be in trend. I think it's most important to first be comfortable with the whole idea of two people. For example, if me and my partner hypothetically were to do this and were to live in, I don't think I'm trying to set in an example. In fact, if there is an example that I am setting, it is also to say that yes, I want to know the person more before I make such a big decision of my life, because as an institution, socially, in the culture that we sort of have grown up living in, it's very important to keep the sanctity of the term and of the label or of the institution marriage. So if some people want to take time before getting into that and making that commitment more social and more public, I think it's absolutely fair. And I personally I think I would encourage people to spend more time in getting to know them rather than in a more of a hasty sort of a decision and rush into meeting somebody, dating somebody, and feeling it to be the most perfect match and getting into marriage and jumping into it. I think so. The sanctity of a marriage remains protected according to me, because I've had a live-in myself, in the past, and that's when I decided that I never would ever again have a live-in. But I think with time you change, and with time you grow, and as maturity sort of sets in and dwells into you, you understand that socially putting pressure on yourself that this is what Bollywood actors are doing, and this is I'm saying for the youth of today, this is what Bollywood actors are doing, so I should be doing this. No, I think it's very important to look at what icons are doing in the right perspective. So yeah. But do you support this kind of rule that has come out? Do you think it's right on the government's part to come up with this rule that they have come up with? I think it's fair. I won't think that it's unfair and unjust, because beyond a point, after so many years of living in, I'm sure two people feel committed and married to each other anyway in their hearts. And I think to really structurize that and say, okay, let's say you're living in, I'm sorry, but I'm not aware of the number of, the time frame that they've set in. More than 2 years. So I think it's fair to sort of structurize it and say that since you have been living in for 2 years, if you choose to, I think very well go ahead with it, and we would declare you married in the eyes of the law. I think it's fair. I would again say that if you look at this in the right perspective, I would say that it still sort of secures and safeguards the sanctity of marriage, because two people have been living together, right, for 2 years. So I'm all for a live-in, by the way. Okay, one last question. If given a chance, which Bollywood actor or Hollywood actor would you love to be in a live-in relationship?
I would not want to be in a relationship with somebody from Bollywood or Hollywood or an actor in the first place. Any particular reason you just want someone to be out of the field? You know, our world of films is really limited. It seizes the growth of people because there's only one way that we look at life. For most of us, I think work is life. Work is films and films is life. While I've just begun to come to this realization that work is not life and life is not films. There are various areas of life, and to have a really joyful, fulfilling life, it's very important to focus on all areas equally and give it equal amount of importance. So, yeah. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ. Grazia is a very special magazine and we're all coming together to celebrate the best in fashion. It's always good to be here. तो आपने ड्रेस के बारे में जानना चाहूँगी, क्या पहना है आज? ये डिफरेंट ये कुछ डिफरेंट है. हाँ, ये बहुत ही स्पेशल आउटफिट है. निखिल थम्पी का है और वो हमेशा कुछ एजी करते हैं. आई थिंक दिस 3D metallic thing is looking quite cool and edgy. So it's all Nikhil Thampi. ये सब अभी बातें कर रहे थे कि आप काफ़ी और फिट हो गई हैं. जी. पर्टिकुलर रीज़न? कोई particular reason? Lot of healthy food, workout and taking care of yourself. Uma, I have a question for you. It is not from this event. Basically, Let's talk about the event, no? just a general thing that I just want to I'll know. okay. Tell me. I'll. Choose to answer it, whatever you want. Basically, Supreme Court has passed a rule saying that the live-in relation couples will be considered as married couples after 2 years. So, do you think in our country the value of the marriage thing will go down because of the rule that has come out? So can I give you my own answer for it? Yeah. My answer is give love a chance. Thank you. Again, we're doing it together. You want to do it together, solo? आजकल आप लोग बहुत ही साथ में आते हैं. लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोगों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है. हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है. हमको 4-5 और फिल्में करनी चाहिए, है ना? अलग अलग किस्म की फिल्में. हम कॉमेडी कर लेते हैं, एक्शन फिल्म कर लेते हैं. तो आप दोनों से जानने की एक्साइटेड हैं आज के अवार्ड्स नाइट? Very excited actually because it's my first time on Grazia Style Awards and it's their seventh. They finished seven years and they were going a bit retro, so I thought we'll dress like that. But yeah, super excited actually. I'm also very excited. Basically, I'm a fashion designer by education. तो जब भी मौका मिलता है to be a part of anything to do with fashion, it's very nostalgic for me. So it's great. Radhika, whom are you wearing tonight? Urvashi Janeja. अरे रुकिए. I'm wearing my father. Pants are my father's. Okay, one question which is not from the event. Supreme Court has recently passed a rule saying that the live-in relation couples will be considered as married couples after 2 years. So do you think that in a country like India, where marriage is given so much of importance, somewhere down the line the importance of marriage will just go down because of the rule coming in? I don't think it will go down, but I'm very happy that they are considering live-in relationships as important as marriage in a way, because it exists abroad everywhere. Not everywhere, but lots of countries. So I'm very glad that they're doing that. But I don't see that the importance of marriage will go down because large population in the country will still get married. Yeah, but I think it's the interpretation also, no? If they would say that by default 2 people who are living together will be considered as married, so then it's a bit. Yeah, I mean, it's a double-edged sword. yeah, Not only married, it's like if you have a child also from a live-in relationship, that child won't be treated as an illegal child. Exactly, It will be yeah. given all the Yeah, legal yeah. conditions, whatever. No, I'm very happy about that. I'm super happy about that. I think it has high time. And you think that our country will accept such kind of rules? I think eventually it will. It will. I mean, in cities you see a lot of couples living together, and I'm not
not saying it will increase, massively, but I just feel that it's good to recognize that. It's good to give that equal importance, and it will hopefully change the mindset of more people, but it will take time, I guess. I'm not so sure about it because I think there are good things to it and there are also equal amount of bad things to it. I think my thoughts are not fully formed about this, so I really need to seriously think about it properly. Yeah. Okay, I know that you guys are married. Not एक साथ अलग अलग ओके लेकिन अगर आप लोगों को एक चांस दिया जाए कि किसी एक बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर के साथ लिव इन रहने के लिए तो वो कौन होगा? My husband. He's also from Bollywood. Oh yeah. Oh, like that. Yeah. Like that. Live in relationship with somebody. Let me see. Claire Danes. I think I'll have it with Kate Blanchett. Have you seen Homeland? That from Homeland, yeah. Claire Danes. Her name is Claire Danes. Claire Danes. Claire Danes. I'd like a living relationship with her. Kate Blanchett, though she's a woman, I'm the biggest fan. I think. Bravo. I'm like It's today okay, is nobody. like a day Cut. to like drop things. Anyway, thank you. स्टाइलिश होते जा रहे हैं आप दोनों, इन दिनों हम देख रहे हैं कोई खास वजह? I think मैं तो हूँ यार स्टाइलिश में। क्या है ना, घर पे भी मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। मैं सोने के लिए जाता हूँ तो बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन के सोता हूँ। कभी मैं टक्सीडो पहन के सो जाता हूँ। तो ये आप लोग आओ, कैमरा को लेके आओ, सोते हुए देखो मुझे। बहुत स्टाइलिश सोता हूँ। मैं बुला रहा हूँ ना यार। I think नहीं यार अभी before Badlapur I haven't done a lot of promotions or sort of not really been to a lot of such events, so I think that's all, and you'll just see me more now only because my film's out. हमने पिछले दिनों में कुछ बातें की थी, आज फिर से आपको बताना चाहूँगा सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे आपकी कुछ पिक्चर्स आई है, कुछ पिक्चर्स ट्वीट हुई है। आपसे जानना चाहूँगा कितना सही है वो और क्या गलत है? तुम्हें क्या लगता है दोस्त मेरे? नहीं मेरा चेहरा तुमने देखा नहीं है ना? देख लो, काम को देख लो। जी net neutrality. No, I think you should go on the save the internet. I think the site is save the internet, and you have to vote. I think that's not the thing. It's like internet is so handy today that any person sitting anywhere in the world can do what he wants and upload what he wants and comment on what he wants or she wants. So I think you can't do much about it. I mean, whether that happens or not, I don't think you can do much about it, and there's no point in indulging into that at all. Sorry. Okay, thank you. Cheers. Yeah. आप नाराज हैं हमसे? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। आप हमसे बात ही नहीं करते हैं? नहीं, अनिल चाचू के घर पे बारे में मैं घर पे खाना आए, लोग पूछेंगे ट्रेलर कैसा लगा आपको, तो ट्विटर पे आप सबको पता लग ही जाता है कैसा लगा। उसके पहले भी हम आपसे 2 बार हम बात करने की फिल्म फेयर पे मैं अंदर था, होस्टिंग करा था, आप लोग उल्टे साइड पे, तो मैं कभी बाहर आया नहीं रेड कार्पेट पे। मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल भी रहा था। और कब था? जीमा के दिन पे भी मैं ऑलरेडी पीछे पहुंच चुका था। और कौन सा इवेंट? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो रहा है ना, आप अंदर से ही आ रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर? मैं अंदर तैयार होकर आ रहा हूँ। इस वक्त पूरी तरह अंदर जा नहीं पाया, मैं सीधा तैयार होकर आप सबसे मिलना है। बहुत अच्छी रात होने वाली है, फैशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने अंदाज में। Grazia has decided to have a celebration of all the young upcoming designers as well as all the established names. और फैशन और फिल्म इंडस्ट्री का तालमेल हमेशा रहा है, तो आज एक और अनोखी रात होगी और मजा आएगा। बाकी डिटेल्स आपको पता लग ही जाएंगे। अनोखी रात चाहिए तो आपका जी सर। नहीं यार, गर्मी ज़्यादा हो गई। क्या आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत गर्मी हो गई थी, बाल लंबे हो गए थे, तो मैंने सोचा काट लेता हूँ। अब थोड़ा आराम है, पसीना कम आता है। यार हर चीज़ के लिए टिप्स नहीं मिलते ना। बाल जैसे काटने का मन किया, काट दिया। आलिम भाई, हाकिम आलिम जो सब जानते, बहुत मशहूर है, हम सबके बाल काटते हैं, तो ही थॉट वी शुड एक्सपेरिमेंट। तो आजकल शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा मस्ती करते थोड़ी बाल के साथ। अर्जुन, आपके 2 और क्वेश्चन। जी पूछिए, इसके पहले मैं गर्मी में पिघल ना चाहूँ, जल्दी से पूछिए।
आईफा अवार्ड में हमने सुना है कि आप और जी। आपके बेस्ट फ्रेंड हाँ। रणवीर are going to host. So, यार क्या अभी तक मेरे से ज़्यादा आप लोग मेरे बारे में सुनते हो तो मैं क्या कहूँ, जब सही समय होगा तो सही लोग इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। Okay, second is not related to the event, but recently government ने Supreme Court ने एक law pass किया है about the live-in relation couple. The live-in relation couple will be considered as married couple when they. Okay, I have not been in the city for the last 10 days. मैं छुट्टी पे था तो I'm not aware of this rule. If it came out before that also, मैंने Twitter या Facebook कहीं पे भी पढ़ा नहीं है तो I would be wrong on my part to speak about it. नहीं, लेकिन आप एज अ इंडियन क्या सोचते हैं कि हमारे इंडिया में काफी यार मैं वही कह रहा हूँ, I don't know the details of it. I don't know what level they've spoken about it. So it would be very stupid of me to just talk without knowing information. इसी तरह unnecessary controversies बनती हैं तो I'll avoid it. Done? Yeah. Thank you. See you guys. Thank you so much. हेलो How are you? गुड ग्रासिया एक्साइटेड आज की शाम के लिए Yeah, it's going to be a very glamorous evening. I'm sorry, sleepy. Yeah, I'm excited because it's going to be an extremely glamorous evening. So I'll get to see a lot of good-looking people, and yeah, it should be fun. और हम ऐसे कहीं तो लिटिल चैम्प की सबसे लिटिल जज है मोनाली ठाकुर क्या कुछ है इसके बारे में Little Champs की सबसे little, yeah, probably height-wise and probably age-wise maybe, but it was a very wonderful experience. My first ever experience as a national reality show judge. So it was fun, and yeah, we are developing something really interesting. कुछ नहीं बोल सकती, बोलना चाहती हूँ because I would like to say it when everything properly shapes up. And with a bang, I hope so. But yes, I will definitely continue singing. I am a musician, I'm an artist. I cannot stop for what drives me for my life. So yes, of course, you're going to see me in all of these forms, hopefully. मैंगो फिल्म के बारे में मुझे कोई बताए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी because I had been waiting for the film to release. I don't know, there are a lot of things that happens in the industry. Everybody doesn't know about it. I have been an actor. I've been hired as an actor. I've acted. I'm now hoping and praying that the movie releases fine and nicely. राजकुमार हिरानी के साथ में कुछ प्रोजेक्ट की बातें चल रही हैं आप लोगों okay. I cannot say anything right now, but yes, I'm trying to shape up something. But Raju sir is an extremely dear person in my life, and I'm really blessed that I have his guidance, I think. But nothing more than that I can say. Thank you. Thank you. I can't move. Today I'm wearing Armani, and I thought I'd go with something very classic. So yeah, trying to have like a very nice red carpet moment right now. It's a very exclusive designer. I'm very excited because Grazia is one of my favorite magazines, and I've graced their cover many times. So it's something that is, I mean, like I love being at these awards to support them, encourage them. Sorry to interrupt you. Okay, yes. So you were telling us about. Grazia? Okay, Grazia, amazing magazine. Been on their cover a few times, and fantastic team to work with. I mean, a great magazine for girls. So today is a great night where we're celebrating fashion and design and glamour. So have to be there and support. Okay, Jacqueline, this is not really event, just one question is around Supreme Court has passed a Can we just not keep the questions to the event, please? Nothing on politics. Come. Please. एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रेस दौड़ के आई हूँ, इतनी गर्मी है और मैंने एक ड्रेस पहन रखा है
ऑफ कोर्स पहले अपसेट थी, लेकिन मैं सो रही थी और जब मैं सुबह उठी तो पता चला कि पोस्टर लीक हुआ है, और डेफिनेटली काफ़ी अपसेट थी दिन में, लेकिन जैसे शाम होती गई रिस्पॉन्स बढ़ता गया, तो सबका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है टुवर्ड्स द पोस्टर ऑफ द फिल्म. सो अभी it feels really good. बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है टुवर्ड्स द पोस्टर ऑफ द फिल्म. सो आई होप दैट ये इफेक्ट रहे, और कोई मतलब लीक और कोई मटेरियल लीक ना हो. दैट्स ऑल. So I don't think I would ask you this because आपको तानिया ही हमेशा से स्टाइल करके आई है. नहीं, एक्चुअली आज एकता रजानी ने मुझे स्टाइल किया है. सो आई लव व्हाट शी इज गिवन मी. उन्होंने मुझे सब्यसाची का एक ड्रेस दिया है. सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी स्टाइल्ड बाय हर. Okay, so Shweta, what are you expecting from the event? या आप अंदर थी और अंदर क्या हुआ है कुछ हमें बताइए. अभी इवेंट में जाने वाली हूँ. एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल था अंदर, तो अभी आई थिंक वो ख़त्म हो गया. देन वी गो इनसाइड. या अभी आपने रॉक कॉन्सर्ट की बात की. गाने भी बिकॉज आपने रॉक में भी आप गाना गा रही हैं, तो नहीं, यहाँ पे मैं गाना नहीं गाने वाली हूँ. अनलेस समबडी आस्क्स मी, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू सिंग फॉर देम. या रॉक की शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है? और रॉक ऑन टू की शूटिंग शुरू होगी अगस्त में. अब गाने किस तरह के होंगे रॉक जो आप गाने वाली हैं रॉक? थोड़ा तो मतलब डालने के लिए सस्पेंस ही हटाना है यहाँ पे. ये भी आज मेरा पोस्टर कल लीक हुआ है, आज ऑफिशियल मैंने और वरुण ने ट्वीट किया है. तो आप लोगों को कैसे लगा पोस्टर? देखा है कि नहीं देखा है? पोस्टर देखा है किसी ने? अच्छा लगा? ओके, चलो गुड. I was the first one to put it on our website. There you go. That's awesome. That's good. Okay, ये पोस्टर देखा है, काफ़ी अच्छा है. वरुण धवन के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? एज एन एक्टर, व्हाट यू वांट टू से? वरुण बचपन से तो मेरा दोस्त है, लेकिन इस फिल्म में उसके साथ काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसमें इतनी एनर्जी है और वो इतना मतलब फोकस्ड है अपने काम के साथ. सो इट्स रियली रियली नाइस. okay, Shweta, मैंने एक न्यूज़ सुना है that you will go to Shillong to practice for your rock on thing. तो ये सही है या क्यों आप लेट्स जाना सी, चाहते हैं? फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक मोस्टली जा पाऊँगी शिलोंग. रॉक ऑन टू के प्रेपरेशन के लिए मैं टीम के साथ जाने वाली हूँ मोस्टली. सुना है बहुत सुंदर जगह है, और ज़्यादा हिंदी सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो रॉक ऑन में हम करने वाले हैं. तो आई थिंक दैट्स रियली गुड. ओके, एक क्वेश्चन है इवेंट में के हिसाब से नहीं, बट एज अ इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक रूल पास किया है that the live-in relation couples will be considered as married couples after 2 years of their stay in a live-in relation. So do you think कि हमारे देश में जहाँ पे Really? yeah. See, I have not heard this. मैं एक्चुअली काफ़ी डिस्कनेक्टेड हूँ विथ व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन. मैं But do you think कि मेरी फेवरेट आ गई है प्रियंका. हाँ तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मैरिज की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी इससे? मैं एक्चुअली इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट मैरिज इज़ अ लवली इंस्टीट्यूशन. आई टोटली बिलीव इन इट. थैंक यू. अगर आपको चांस दिया जाए किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर के साथ लिव इन में रहने का, तो वो कौन है? अरे बाप रे, ये तो पहले रिलेशनशिप होने दो, फिर लिविंग की बात कर सकेंगे. But I think that marriage is a very great institution. I believe in it, and I believe in live and let live. जो जिसको करना चाहिए, live in relationship हो या नहीं हो, that's an individual choice. So yeah, respect. Thank you guys. Thank you. Hello everyone. क्या पहना मैंने? मैं हमेशा भूल जाती हूँ. मैं आदत नहीं होती. Wait. Ashy couture. I'm wearing ashy couture. मैं कभी याद नहीं रखती what I'm wearing usually, क्योंकि मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े आते हैं and then I just say whichever one I like. But today I'm wearing ashy couture. तो अभी में प्रियंका के दो अलग-अलग लुक देख लिए हैं. ट्रेलर लॉन्च के लिए वो तो ट्रेलर लॉन्च था प्रेस के लिए एंड हमने पहली बार दुनिया को ट्रेलर दिखाया है एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग
क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत डिफरेंट लुकिंग फिल्म है और डिफरेंट लुक राइट नाउ बिकॉज ये ग्रासिया यंग फैशन अवार्ड्स हैं तो फैशनेबल तो बनना ही था। आई एम हैप्पी, यू नो, जो फैशन अवार्ड्स होते हैं वो हमेशा फ़न होते हैं, जब आपको मिल रहा होता है वो और भी फ़न हो जाता है। सोशल नेटवर्क की मीडिया पे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि अगर प्रियंका चोपड़ा से बार आउट ऑफ इंडिया जाया करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम इंडियन को भूल जाएंगी और वहीं की रह जाएंगी, होकर रह जाएंगी, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लोग तो बहुत बातें करते हैं, उन पे ध्यान देना मैंने कब से छोड़ दिया था। बातें करना उनका काम है, काम करना मेरा काम है। मैंने हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जब भी आप अपना मन ठान लें तो आप हर चीज़ एक साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े दूसरे के लिए, और ये एक आई थिंक इंडियन औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है। हम घर भी संभाल लेते हैं, काम भी संभाल लेते हैं, तो उसी तरह मैं इंडिया भी संभाल लेती हूँ और बाकी जहाँ पे भी मेरा काम जाएगा उसको भी संभाल लूँगी। प्रियंका, एक क्वेश्चन है आपसे, इस इवेंट से नहीं है लेकिन आप अगर मुझे जवाब दें इसका, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक लॉ पास किया है दैट द लिव इन रिलेशन कपल विल बी कंसिडर्ड एज मैरिड कपल। डू यू थिंक कि हमारी इंडिया में जहाँ पे मैरिज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है वहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज का जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा? यू नो, आई थिंक ये एक बहुत इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट है। आजकल आप देख भी लें तो मतलब बहुत मुश्किल होता है मैरिजेस को इतना लंबा सस्टेन करना जितना पहले होते थे मैरिजेस। तो आई थिंक ये एक हर इंडिविजुअल के लिए डिसाइड करने की बात है कि अगर पूरी दुनिया में होता है कि इफ़ यू स्टे विद समबडी बियॉन्ड 6 months या 8 months इट्स यू आर कंसिडर्ड यू टू हैव लीगल राइट्स। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल सी बात है, एंड जो लोग एक साथ रहते हैं और शायद शादी में ना बिलीव करें, आई थिंक हर इंसान के लिए राइट्स होने चाहिए। और हम एज अ कंट्री बहुत डिक्टेट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक लोगों को छोड़ देना चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी की तरह बिहेव नहीं करते आजकल। सो यू नो, लेट्स जस्ट लेट पीपल बी एंड लेट पीपल लिव देयर लाइव्स विदाउट जजिंग। हम अपने ऊपर ध्यान दो, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन बॉस। मैंने पढ़ा कि इट्स नॉट गोइंग टू गो ऑन क्लोज लाइन्स, आप क्या कहना है? मधुर और मैंने डिसाइड किया कि मैडम जी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी वक्त से। हम लोग बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे, सो फाइनली वी डिसाइडेड टू पुट इट ऑन होल्ड। अभी उसके बारे में मैं नहीं सोच रही, मधुर कुछ और कर रहे हैं। मैं बाजीराव ख़त्म कर रही हूँ, दिल धड़कने को रिलीज़ करूँगी, गंगाजल ख़त्म करूँगी, और उसके साथ क्वांटिको कर रही हूँ। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट देते हैं एंड देन वील सी इन द मीनवाइल ही इज़ डूइंग अनदर फिल्म एंड मैं अपनी प्रोडक्शन में I'm developing about 3-4 films which may or may not star me. हम आपको मैडम जी भी नहीं बुला पाएंगे। वही तो देखा। थैंक यू सर, थैंक यू।